தசகம் 11 हिरण्याक्षस हिरण्यकशिपोस उत्पत्ति कर्मेण सर्गे परिवर्तमानेः कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमद्दिरे से मनोजनैश्रेयसहनात्यै अनेकवापि पणिमन्दिरै च अनोपमां तं भवदानिकेतं निहीश्वरं वा प्रभादिककाक्ष्य भवद्दिरुक्षीन् भवनं विविक्षुः द्वसासिदौ यज्ञना विजेय बृन्द्या देशां ससिद्धो पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणरणैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुजिदिप्रशिष्टौ कष्टौ युवां दैयुगत्यगतं भजेतम् इति प्रसाप्तो भवदार्चयौदौ हरिस्मृन्दौ स्मिदिमेनुमस्तान् तदेव दाज्ञाय भवानमाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सा पितुचारुबाहुः आनन्दयं समभिराभमूर्त्या प्रसाक्तगीर्भिः स्वदो मुनीन्द्रन् आनन्द्यनाद वदभाषदौधौ सम्प्रम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माः मुभेत्यमिद्यत्य कृपं न्यगादि द्वदीयभृत्या वदगास्य भादौ सुरारिवीरा उदितौ त्वौ तन्यास्मुबद्धनकाष्ठश्रेष्ठौ यमोसलागेश यमाविनान्यो हिरण्यपूर्वकशिभुकिलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रदीध उबन् भवानन्दमशेषलोकं रुषा निरन्दा निजवासनान्धौ दयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्य दैव्री भवद्भ्यां क्षां सलिले निमग्नः ससारकर्वा विनिदान् कदावान् तदो जले सा शत्रुसम्भवन्तं निशम्य बप्राम कवेशयस्त्वा भक्ते गरुच्चैग नृपानि देवं निरन्दिरोगान् मरुदालये स दशकं 12 वराह अवतारः स्वायम्भुवो मनुधरो जनसर्गशीलोः दृष्ट्वा महीसमये सलिले निमग्नां सृष्टारमावचरणं भवदङ्घ्रिसेवाः दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मयनिमग्नाः स्थानं सरोजभवकल्पय तत्र भजना यत्ये मिषकदितो मनुनानुभव्यम् अम्बोरुहाक्षतव पादयुगं व्यचन्ति आहा विभो जलमहं न्यभिबम्बुरस्ताः अद्याभिमज्जति महि किमहं करोमि इद्वं तदङ्घ्रियुगलं चरणं यदोऽस्यः नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदगुम्बिसकृसमजम्बदास्त्वम् अप्रेतदाविदमुगीश भवन्दमुच्चैः विस्मेरदाभिधिरगा सहसूनुविश्वै कोशाविचिन्त्य महिमा किटिदिन्दधूमेः नासापुटा किमभवेत जिदस्य माया इत्थं विजन्दयति दादरिशैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जितिघोरघोरं तं ते निनादमुखकर्ण्यजनस्तभस्ताः सत्यत्तिदा च मुनयो नुनुवर्भवन्तं तत्रोतहर्षलुमना परिणत्य भूयः सत्योऽसयं विपुलमूर्तिरवाददास्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिदूर्मर वितूरदोर्माः प्रोक्षक्षिबालधिरवाङ्गुमकोरगोण धूर्णप्रदार्नि जलते परिपूर्णदक्ष्णाः सोऽस्रोन्मुनिञ्जशिरय अवधेरिदस्त्वम् अन्तर्जलं तदनुस्कुलनक्रचक्रम् प्राम्यत्यधिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविच्य भीषणरवेण रसादलस्ताः आकम्बयन् वसुमदं मगयेष्वदस्त्वं दृष्ट्वा ददैस्तहदकेन रसाधलान्ते संवेशितां जटितकूटकिटेर्विभोत्तम् आबाधुकानविगणय्य सुरारिकेडान् तं शाङ्गुरेण वसुधा मदता सलीलम् अभ्यत्तुरन्नदनदरां
दशनाक्रलग्न मुस्ताङ्गुराङ्कित इवादिकबीभरात्मा उद्धूदको रसलिलीला जलतेरुदञ्जन् क्रीडावराहबभुरी च पाहि रोगान्. दशकं 13 हिरण्याक्षवधः. हिरण्याक्षं दावत् वरदभवदेन्वेषणपरं चरन्दं साम्वर्धे भयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो कात्वा कपटोपरुदे नारदमुनि शनैरूसे नन्दन् धनुजमभिनन्दं स्तवबलम्. समाया विष्णोर्हरद भवदीयां वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमदितेनाभिकथित नदन् क्वासो क्वास विधिसमुनिना दर्शितपदो भवन्तं सम्प्राप तरणिधरमुद्यन्दमुदगा अहो आरण्योऽयं मृग इति असन्दं बहुधरै उरुग्दृग्दै विध्यन्तं दिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंश्र शिरससहितं स्वेन महसा भयोधावाधाय प्रसवमुदयुङ्क्ता मृदुविदौ कदौ बाणो दैत्ये त्वमभिहृदीदो नगरदो नियोद्धेन क्रीडन् कडकडरवोत्कुष्टवियदा रणालोकतुक्यान् मिळति सुरसङ्गे त्रिदममुं निरन्द्यास्यन्ध्याध प्रथममिति तात् राजकदिशे कदोन्मर्ते तस्मे तव खलु कदायां विभो कदा कादद्भूमो जडितपदया महबो मृदस्मेरस्यत्वं तनुजकुलनिर्मूलनसनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुविदितानो रुरुषिषे तदक्शूलं काल प्रतिमहर्षि दैत्ये विसृजति वैच्छिन्दत्येन करकलितचक्र प्रहरणा समारुष्टो मुष्ट्या सगुलविदतोस्त्वां समधनो कळन्माये माया दैकलजगन्मोहनगरी भवच्चक्रज्योतिष् कणलवनपादेन विदुते तदो मायाचक्रे विदितनगरोषान्तमनसं करिष्ठाभिर्मुष्टि बृहदिरभिरक्नन्दमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणमदमूले निरवधि महाकायस्योऽयं तव चरणपादाः प्रमिददो कळक्रक्तो वक्त्राध अबदऋषिभिः श्लाघिदहिति तदात्मामुत्थाम प्रथमपरभिन्योदहृतया मुनेन्द्रस्तान्ध्राभिः अभिरुदुवन्मन्दवरदनुं द्वैच्छान्दो रोम वभिकुशगणचक्षूषीकृतं चतुर्होदारोऽङ्ग्रौ सकृभिवदने सोदर इडा गृहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे समसा विभो सोमो वीर्यं भरतकळदेशे व्यपसुध मुनीन्द्रैरित्यादि तवनमुगरैर्मोदितमना महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या सविलसन् स्वदीक्षिण्यं सम्प्राप्त सुगरसविहीराः मधुरिपो निरुन्द्यारोगं मे सकलमभिवादालयपते. दशकं 14 कपिल अवतारः.
समनुस्मन्ददाङ्ग्रयुग्मः समनुभङ्गजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दरमन्दराय हीनं सरिदं दे कदयन् सुगं निनाय समये खलु तत्र कर्तमार्यो त्रिहिणिच्चाय भवस्तदीयवास तदसर्करसो निसर्गरम्यं भगवन्मामयुधं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघमम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितो लसिताननं विभोत्मं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय तुवदे पुलकावृदाय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां नभाभिपुत्री कपिलं ससुदुं स्वमेघपच्चा स्वगिदं साप्नुय गृह्य निर्गतो भू समनोच्चतुरूपया महिष्प्याः गुणवत्या सुदया स देवहूत्या भवतीरिदनारदोपदिष्टः स्मगता कर्दममागधिप्रदीक्षं मनुनो बहृतां स देवहूदी तरुणीरत्तमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृदोऽपि तस्य दृढशुश्रूषणया तदौ प्रसादम् स पुनः त्वदुपासनप्रभावा दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरादे भवदेष्वदैदहूत्या शतवर्षमदव्यतीतसोऽयं नवकन्या समवाप्य तन्यरूपा वनयानसमुद्यभोभिकान्ता हितकृद्भज्जननोत्सुगोऽन्यवासी निजपत्रिकिरा भवन्निषेभा निरदाया मददेव देवहूत्या कपिलध्वमजायता जनाना प्रदयिष्णन् परमात्ममद्विविद्यां वनमेयिष कर्तमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपाधि सञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुनन्दिरेश त्रिविधं तं परिपाहि मां कदौघात् दशकं 15 कपिल उपेदशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्पेशसक्ता त्वमृदकृतबृन्दे भक्तियोगस्तु सक्ति महतनुमकल्प्य भक्तिरेवात्र साध्या कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादि प्रहृतिमहतहङ्गाराच्च मात्राच्च भूतानि अभिहृदविधिसाक्षी पूरुष पञ्चवंस इति विदितविभोगो मुच्यते सौभृगत्या कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादि प्रकृतिगतगुणौघै नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यं तद्गुणास्तं भजेट्रन् मधुनुभजननत्वा लोचनै साप्यभेयात् कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादि विमलमधिरुभात्यै आसनाद्यै मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलदितमालां शीलयेदानुवेलं कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादि मम गुणगणलीला कर्णने कीर्तनात्यै मयि सुरसरिदोग प्रख्यसिद्धा निवर्ति भवति परमभक्ति साहिर्न्त्यो विजेत्री कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादि
अहह बहुलिलं सा सञ्चिदात्तै कुडुम्बं प्रददिनमनुषं श्रीचिदोपाललाळी विसदहिरसक्तो यादनां मय्यभक्ता कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादी युवति जडरकिन्नो जातभेदोऽप्यकाण्डे प्रसवकलितबोध पीडयो लङ्क्य बाल्यं पुनरविपदमुह्य एव तारुण्यकाले कबलितनुरिदी त्वं देहकूत्यै न्यगादी पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थ ससननिपतितकाले दक्षिणात् वोबकामि महिनितमकामं कर्मदुद्भक्तवार्तं कबलितनुरिदी त्वं देवहूत्यै न्यगादी इति सुवदितवेद्या देवदेहे बहूदी कृतनुदिमनुगृह्य त्वं कदो योगिसङ्कै विमलपतिररासो भक्तियोगेन मोक्त्या त्वमपि जनहितार्थं वर्धसे प्रागुदीस्या परमकिमहुक्ते त्वत्पदाम्बोजभक्ति सकलभयविनेत्ति सर्वकामो बनेत्री वदसि खलु दृढत्वं त्वद्विधूया मयान्मे गुरुभवनपुरेश दिव्यपादात्मभक्ति दशकं 16 नरनारायणोय अवतारः दक्षयाहसः दक्षो विरिञ्चदनयोधमनोतनूजाः लत्वा प्रसूतमिह षोडशसाबकन्या धर्मे त्रियो सततदौ पितृषु स्वदांस स्वाहा हविर्भुजि सति गिरिसे त्वदंसे मूर्तिः धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसगं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृतदूर्यघोषाः पुष्पोत्करां प्रबरुषे नुनुवं सुरौघा दैत्यं सहस्रकवसं कवसैपरीदं साहस्रवत्सरतव समराभिलव्यै पर्याय निर्मिततव समरौ भवन्तौ शिष्टिकसङ्कटमुमुं न्यहदां सलीलम् अन्वासरन्नुपदिशन् अभिमोक्षधर्मं त्वं प्रार्थुमान् बदिरिगाश्रममद्यवासी चक्रो तदे समदपोपलनिस्सहात्मा दिव्याङ्कना परिवृतं व्रजकायमारम् कामो वसन्तमलया निलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविसिगै विकसद्विलासी विद्यन्मुहुर्मुखरुकं मुदीक्ष्य सत्त्वा पीदत्वयाद जगदे मृदुहास्यभाजा पीत्यालमङ्गवदन सुराङ्गनावो मन्मानसन्विहजुषां त्वमधिप्रभाण त्वं विस्मयेन परिदस्वदामदैषां प्रादर्च स्वपरिसिकार कादराक्षी सम्मोहनाय मिलिता मदनोसयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहबाबु तत्तां दया सजगृह स्तरवैव सर्वासिगा क्रवसमनीं पुनरुर्वसीं त्वाम् दृष्टोर्वसीं तव कदां स निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमश्चात् एवं प्रसन्तरमणीयतरावतारा त्वद्बोधिको वरद कृष्णधनुस्त्वमेव दक्षस्तुता तुरिलला नयारजोन्धो नाद्यारुदस्त्वयि सकष्टमसान्दरासि येन बृसन्दस भवतनुमेव सर्वं यज्ञे स वैरपि सुने वसुधां यमानीत् कृत्ते समर्थितमगस्तुर्घृतशीर्षो देवप्रसादिहरः तदलप्तजीव त्वत्पूरितक्रतुवरा पुनराभशान्तिं सत्त्वं प्रशान्ति किरपाहि मरुत्पुरेश
தசகம் 17 திருவச்சரிதம். उद्दानपादनुपते मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरिसे निधराम्बभीष्ट अन्यासुनेतिरधिपत्रुरानृदासाः त्वामेव नित्यमगति चरणं कदाभूत् अङ्गे पितृसुरसिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सनूदि सुदोदृदेश्यन् आशिक्षिबे किल सुधरां सुरुच्च दुष्यन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया तन्मोहिते पितिरिपच्छति तारवच्चे दूरं त्रिहर्निधि सगोदरी जबाम् साभिस्वगमगनिस्तरणाय पुंसं त्वत्पादमेव चरणं शिशवे सशंस आकुर्ण्यसोऽभिभवदर्चन निश्चिदात्मा मानी निरेद्य नगरा किल पञ्चवर्ष सन्तृष्टनारदनिवेदितमन्द्रमार्ग वामारराध तपसा मधुकाननान्ते तादे विषण्ण हृदये नगरीं कदेन श्रीनारदेन परिसाविदचित्रवृत्तो पालत्वदर्पितमना क्रमवर्तदेन निन्ये गरुड तपसा किल पञ्चमासान् तावत्तभो बलनुचिन्वसिदे निगन्धे देवार्तिदस्वमुदयन् करुणार्तसेधा तत्रूपचित्रसनिली नमदे पुरस्ता आविर्बभूविद विभो गरुडातिरुज तद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृक्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेन दुष्टूषमाणमववक्य कपोलदेश सम्पृष्टवानसतिरेण तदातरेण तावद्विबोधविमलं प्रणवन्दमेन आभाषदात्ममगम्य तदीयभावं राज्यं शिरं समनुभूय भजस्व भूय सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवर्तहीनं इद्युषिषीद्वैकदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेत रामे शिरं भवदनुग्रहपूर्णकाम सादे तदेशवनमारुदराज्यभार यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः युद्धनिरतो वरदो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया तनुदानुभेदा तद्भक्तिमेव सुदृढमवृणोत्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषणीदविमानयादो मात्रा समं त्रिभवते मुदितो यमास्ते एवं स्वभृद्य जनपालनलोलधीस्त्वं बादालयादिपननिरुन्धि ममामयोगान् दशकं 18 पृथुचक्रवर्ती चरितम् जानस्य त्रिवकुल एव तुङ्गकीर्तेः आगस्यं वचनसेषु सवेन नाम तद्दोष्य व्यधिमदे समराज्यवर्ग्यः त्वत्पादे निजमानवनं कोदभूत् पापोऽभिषिदितलपालनाय वेन पौरातेरुपनिहितकडोरवीर्य सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूजक्रे तव यजनन्यं न्यरौत्सि सम्प्राप्ते हितकदनाय तापसौखे मद्दोन्यो भुवनपदे न कस्य स्नेधि त्वन्निन्दावसनभरे मुनीश्वरैस्तै स्वाभाग्नो सलभत सामनायिवेन तन्नासा कलजनभे कृरिर्मुनीन्द्रै तन्मात्रा सिरिपरीक्षते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतितादतोरुदण्डा तद्दोण्डे परिमतिदेत्ममाभिर्यासि विख्यात प्रकृतितापशोभदिष्टै सूदाते परिणुतभाविभूरिवीढ्यै वेनात्रा कबलितसम्भतं धरिद्री आक्रान्तं निजधनुषा समामकर्षि युस्तां निजकुलमुखयत्पदयुक्तै देवाते समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि दानि स्वच्छन्दं सुरभिधनो मधुदुहस्त्वम्
आत्मानं यजति महै स्वयि धरिताम आप्राप्ते सततमवाजिमेदयागे सप्तालु सतमग एगवनीसवेषु हृत्वा स्वं तव दयनाम्बराजिदो भू देवान्त्रं मुहरितवाजिनं हरन्तं वक्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषु वृन्दाने कमलभवे करोत्समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिभुमैक्षदा स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलप्य भक्तिमेघां गङ्गादेविहितपद कदाभिदेव सत्रस्तं मुनिव्यहं हितानि हंसं जोष्टासि सनमुगान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनगमुगोतिदं तदानी स्वात्मानं स्वयमुगमो वनान्दसेवी तद्दातृपृदुवपुरी स सत्वरं मे रोगौकं प्रसमयवादकेहवासीन् दशகம் 19 प्रेसे दशां कदा प्रोदोस्तु नप्ता पृथधर्मकर्मटः प्रासीनबर्हियुवयोत्सदत्रुतो प्रासेदसो नाम सुसेदसुधा अजिजनत्वत्करुणाकुरानिव पितुसिरुक्षा निरदस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरदादशाभिते भयोनिदं पश्चिममेद्य तत्तडेः सरोवरं चन्द्रुसुमर्मनोहरं तदा भवद्दीर्थमिदं समोगतो भवो भवत्सेवगदार्चनातृत प्रहासमासत्य पुरप्रसेदसः मुबाधि सद्भक्तदमस्तवस्त्वं स्तवं जबन्धस्तममी जलान्दरेः भवान्तमासेव विषादायुसमा भवसुगास्वातरसादमीष्मह्यान् बभूव कालो ध्रुवबन्धशीघ्रधा तपोभिरेषा मदिमात्रवर्धिभिः यज्ञकिसानारिदितो विभावित पितापि तेषां गृहयादनारद प्रदर्शिदात्मा भवदात्मदां ययो कृपाबलेनैव पुरप्रसेदसा प्रहासमागा पथकेन्द्रवाहन विराजिचक्रादिवरायुधां सुबी पूजाभिराष्ट्राभिरुदञ्चित्युति प्रसेदसां तावयदास्तदामभि त्वमेव कारुण्यपरात्परानध भवद्विचिन्दा पिशिभाय देहिना भवत्यसौ रुद्रनुदिच्छ कामत अवाप्य कान्तां तनयं महीरुहां दयारमत्वं दशलक्षवत्सरी सुदोस्तु देशो ननु दक्षिणाच्छमा प्रयास्तदे न्यक्तदो मुदैभता तदच्छते भूदलरोदिनस्तरून् कृदा दहन्दे त्रिहिणेन वारिता त्रिमैश्च दत्तां तनयामवाप्यता त्वदुक्तकालं सुखिनोऽपि रेमिरे अवाप्य दक्षं स सुदं कृदात्मरः प्रसेदसो नारदलप्तया धिया अवापुरानन्दपदं तदाविद त्वमीशवादालय नाद पाहि माम् दशகம் 20 ऋषिभयोगीश्वरचरितम् प्रियवरदस्य प्रियपुत्रभूता आग्नेयदिराजा तुदेहिनाभि त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टमध्येः तवैव दुष्टे कृतयज्ञकर्म अभीष्टु तत्तत्र मुनीश्वरैस्त्वम् आज्ञां सुदुल्यं सुदमध्यमानः स्वयं जनिष्ये हमिति प्रवाण तिरोदिदा पर्हिषि विश्वमूर्ति नाभिप्रियाया मदमेरुदेव्या त्वमां सदोपो ऋषिवापितान् आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविदाशेषजनप्रमोद द्वयी त्रिलोके प्रतिराज्यभारं निधाय पापी सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेभिः कदकिलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्तुवद्दुःखकृदाकमर्षा द्ववर्षनास्मिन्न जवाबवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्याः स्ववर्षमेन्द्यं यददा स्ववर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीः
आमोदवाक्ना अमरात्तयोऽपि अजीजनस्त्रं सदं तनुजा नेषाक्षिदीशो भरदोक्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये वबालयन् भारतवर्षखण्डान् सैगादधिस्थितशेषपुत्राः स्तबो बलात् भूसरभूयमीयो उक्त्वा सुदेप्येदमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्या विदमुक्तिमार्गं स्वयं कथं पारमहंसवृत्ति मदा जडोन्मद्दपिशाचर्यां परात्मभूतो विपरोपदेशं कुर्वन् भवान् निरीच्यमान विगारहीनो विससार कृष्णा महीमहीना मरसाभिलीना स्वयुभ्रदं गोमगृहाकचर्यं शिरं शरण्याप्यपरं स्वरूपं तबाहृदाङ्गकुटकासलेतं तावान्ममाभा गुरुवादनाथ